गुड मॉर्निंग, गुड डे, नमस्कार। सूरज सिंह, ये सूरज सिंह स्पीकिंग फ्रॉम भारत। मैं हूँ सूरज सिंह, भारत में बोल रहा। रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ कोविड-19 एज yesterday, that was it was 26th November 2020, कल का दिन 26/11 संविधान दिवस। और कोविड-19 का स्टेटस आपके सामने आज जो रिपोर्ट में आया, ये स्टेटस कल के बारे में रिगार्डिंग यस्टरडे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ केसेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज नाउ दिस वन, 13,17,62,749। अब तक के जो टोटल उन्होंने सर्वे किया, टेस्ट किया पेशेंट्स पे, पब्लिक पे, on people they tested and they discovered till now they recorded 13,70,62,749 out of population of 130 crore, which is 10.543% only, and remaining population is 89.457%. अब तक जो टेस्ट किए गए हैं उसमें 10.543% लोग कवर होते हैं 130 करोड़ में से, और 89.457 अभी बाकी हैं जिनका टेस्ट होना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना काम बाकी है। 116 करोड़ लोग, 116.29 करोड़ लोग, 116.29 crore people are waiting for test if government is interested, if nation is interested in their tests. Otherwise, whether or not they are patients, nobody can say they are patients of corona or they are not patients of corona. This cannot be decided without conducting a test, because it's not necessary that one should show symptoms. Without symptoms also, asymptomatic you can say, there can be patients of corona, there will be many cases. अभी तक बहुत से केस में जरूरी नहीं कि सिम्टम हो उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। केस हुए हैं बिना सिम्टम भी केस होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे सबको होते हैं, और लोग मर जाते हैं एकदम। ये बात हमको समझनी चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं होंगे तो नहीं होगा। ये शर्म की बात है कि ये डाटा बता रहा है, सरकारी डाटा कह रहा है हमने अब तक 10.54% टेस्ट किए हैं, जबकि दिन समाप्त कितने हो गए, 270 days have already gone since January. So that is really shameful. Every time I say it is shameful, and we should die in fist water, fistful water. So next is 11/31/2004. ये आपका डाटा, this data says yesterday there was a test conducted on 11.31 lakh people. 11,11,31,204 पे कल टेस्ट किया गया। हमारी स्पीड इतनी ही है 11.31204। अब आप सोच लीजिए, अगर इतने ही टेस्ट रोज हो सकते हैं तो ये पॉपुलेशन जो बाकी है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। अभी दिखा देता हूँ आपको। आई जस्ट शो यू बाय कैलकुलेशन पर डे, कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन पर डे दिस इज टेस्ट, and total tests are remaining this. So total people are remaining divided by per day. And how many days 10-28 days with this one. I'm not taking average, I'm taking this yesterday's one. With this 10-28 days are required, and with this one we take 1144 days. So you can say with what efficiency we are moving. We are moving in very slow efficiency, just for indication of yourself. So I'm just taking it up because it's only one day, it cannot be taken like this. So okay, now 1144 days are required on average basis. 1144 दिन हमको चाहिए कम से कम इन लोगों के टेस्ट पूरा करने के लिए। और मैं नहीं समझता ये कोई प्रैक्टिकल बात हम कर रहे हैं। हम एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और काल्पनिक बात कर रहे हैं। 1144 डेज का मतलब 3.13
3.13 years, because it is to be divided by 3.365. So I get, I'm sorry, 365 get 3.13 years, 3 साल से ऊपर का समय आपको, अगर आपने इनके टेस्ट करने हैं तो आपको इनके जीवन को जानना है कि ये मरेंगे या जिएंगे। ये बात मेरा कहने का मतलब है। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बार मैं करता हूँ। और ये कल तक के हिसाब से 93,09,787 अभी तक के जो पॉजिटिव केसेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो डिस्कवर हुए, वो रिकॉर्ड हुए 93.0978 lakhs, which is nearing 1 crore, approximately 93% of a crore. So forget crore or lakhs, question is only this much. That's a big question mark. And they are feeling happy, see only this much. This, if you say this is that, 93 lakhs, if you just take coverage of this and see ratio here, population wise, you can say 8.9, 89% more you have to test. If you take this multiplying factor here, let's say here I take, this is plus, this divided by this, so I get a factor of 8.48. 8.48, this I take a factor. If I multiply this one, 93, this is 8 times, means if you say this factor, if I multiply with this factor, if I multiply with this, you see how much it is? 78.9. 78.9 crores you have to test here. What a joke, it's joke, complete joke. Really? You have to test. If I take factor here, because so many people are balanced, 89 are balanced, and if I say it is 8.48, you can say if I divided this one, I have divided this one by this one, I get this for coefficient, this factor 8.484, and when I multiply this with this already tested, you have to test 79 crore people, and you know how much time it takes. So there is no meaning in stating something like that. So this is just for information here. I'll change it, no problem, because I'm not interested to confuse, but it's very simple. And about 10 crore D5, which is population, L74, which is this one, L74, I divided with this, I get 10 crores must have been infected by now. It can be known only after they are tested, and this is yesterday's positive discoveries, positive records, 43,082. 43,082 को कल रिकॉर्ड किया गया पॉजिटिव। और ये कल तक के टोटल डेथ 1,35,715, 135,715, 1,35,715, ये कल तक की डेथ। और we go move forward, just for 270 days are over, and we move forward, we have to wait for 44 days, and this curve is telling you everything, how many mountains, how many valleys, and that we know very well. And we go to detailed statistics of this, that yesterday Maharashtra 18.02 lakhs, Karnataka 8.79 lakhs, Andhra 8.65 lakhs, Tamil Nadu 7.76 lakhs, Kerala 5.83 lakhs, Delhi 5.51 lakhs, and Uttar Pradesh 5.35 lakhs, West Bengal 4.7 lakhs, Odisha 3.16 lakhs, Telangana 2.67 lakhs, Rajasthan 2.56 lakhs, Bihar 2.32 lakhs, Chhattisgarh 3.3 lakhs, Haryana 2.26 lakhs, Assam 2.12 lakhs, Gujarat 2.04 lakhs, Madhya Pradesh 1.22, or you can say 2 lakhs, and Punjab 1.49 lakhs, Jharkhand 1.08 lakhs, Jammu Kashmir 1.08 lakhs, Uttarakhand 72,907, Goa 47,341, Himachal Pradesh 37,491, Pondicherry 3684, Tripura 3261, Manipur 2494, Chandigarh 17051, Arunachal 1620, Meghalaya 1158, Nagaland 1106, Ladakh 8228, Sikkim 487, Andaman and Nicobar 46, and Mizoram 378, Dadra Nagar Haveli 33, and Lakshadweep 0. This is yesterday's statistics details. You can see otherwise also. This is total cases, this is active cases, this is discharge, this is edits.
This is F is active ratio, this is discharge ratio, and this is death ratio, and this is name of state. So you can go through either here or on government website. You know very well which I'm talking about. I'm not interested in these one because these are just for record's sake. Most important is this one. I'm not interested in discharge because there's discharge only without any guarantee, and there is a death. Whatever that's recorded is recorded, and forget active ratio, forget this only to please oneself without any reality. And this is here we come back to our main point. There's no improvement. It's still moving same. It's still moving same. It's not constant. Something there's no control. Till now, despite many talks, nobody is interested in government to worry about this. No interest at all. And I can say that no interest at all. What to say about this means, if you're not taking any interest means, no one can help it. No one, उनकी कोई क्या करेगा जब वो I think कोई क्या करेगा अगर वो नहीं करेंगे तो. If you are not happy to work out, to chart out some plan for certain concrete action, what can be done? Such a wide government, structure of government is very big, hierarchy is very big, and if they cannot control such data and link it to people, to tell people what's the future of this after 1 month, after 2 months, after 3 months, after 4 months, means what's the scheme, what's plan, nobody can say anything. There's nothing in this. I'm sorry to say, professionalism doesn't exist there. There's no professional, no analyst in government. A ministry, I think minister himself is an analyst, and what analyst a minister can do, we know very well. There's no minister in this government who can project to people, who can inform people that we should be out of this emergency on this date, Nothing is, यहाँ कुछ नहीं बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होगा. बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि प्रॉब्लम पब्लिक को, उन लोगों को है. फिर वही बात, जो इसके नीचे आ रहे हैं वो लोग जो फंसे हैं इसमें, जो वेट कर रहे हैं अभी तक. जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि ये जो है आपका 10.543 क्लियर कर दिया गया तक टेस्ट के द्वारा, और 89%, 89% अभी भी फंसे हुए हैं. एक तरह से वो नहीं जानते वो फंसे हुए हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं. क्योंकि वो कौन हो सकते हैं आप जानते होंगे. 80% वो लोग जो सबसे फाइनेंशियली नीचे स्तर पे हैं. हर तरह का लोग हो सकता है उसमें. वर्कर्स हो सकते हैं इंडस्ट्री के, और कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं. बहुत छोटे लेवल के रेडी वाले, तांगे वाले, रिक्शा वाले, खोमचे वाले, वो लोग हो सकते हैं. और वो लोग जिनके पास शायद बिल्कुल पैसा नहीं होगा, वो भी हो सकते हैं. छोटा किसान हो सकता है, छोटे दुकानदार भी हो सकते हैं. वो सब लोग इसमें कवर होते हैं, जो कि अभी तक पता भी नहीं है उनको कि क्या हो सकता है. उनको मालूम भी नहीं है कि क्या नुकसान हो सकता है इस कोविड से. वो नहीं समझे, क्योंकि बहुत लोग नहीं ध्यान देते. और ये भी आवश्यकता है कि आम जनता इस तरफ ध्यान नहीं देती है. हो भी रहा हो, किसी को चिंता नहीं होगी, अरे कुछ नहीं होता भाई, जाने दो. सोच ऐसी बन चुकी है, कुछ नहीं होता, वहम है, अरे देखा जाएगा. तो जो लोग मास्क तक लगाने की तकलीफ नहीं कर सकते, हम उनसे क्या कहेंगे, वो क्या सोच सकते हैं. जो मास्क नहीं लगा सकते, चश्मा नहीं लगा सकते, वो क्या. लेकिन हमें वो क्या सोच सकते हैं ये नहीं देखना है. हमें ये देखना है कि हम क्या सोच सकते हैं, सरकार क्या सोच सकती है, और वो लोग जो ऊंचे पदों पे वो क्या सोच सकते हैं. क्या वो सोच भी सकते हैं, और अगर सोच सकते हैं तो क्या वो सोच रहे हैं. प्रश्न ये उठना चाहिए. हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी पूरी है, पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्री है, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग? आर दे एबल टू थिंक? If they are competent to think, are they thinking? Question is that. अगर वो सोच नहीं रहे तो उनका होना ना होना एक बराबर है कोविड-19 के लिए. सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट कोई देश में नहीं है. क्या सुप्रीम कोर्ट ने किया इसके बारे में आज तक? कोई पूछने वाला नहीं है. पार्लियामेंट क्या कर रही है, कोई बहस तक नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है. मिनिस्ट्री क्या कर रही है, देख रहे हैं, आपके सामने है. ये निचोड़ है मिनिस्ट्री का. सबसे बड़ी इमरजेंसी कोविड-19 एट दिस मोमेंट इन 2020, एंड देयर इज नो प्रोजेक्शन फ्रॉम मिनिस्ट्री. दैट्स अनफॉर्चुनेट. Ministry has to do something. It's not doing anything. Unfortunately, they are not doing anything. Go ahead now.
निकल जाएगा। Yeah. So, my dear, I am very serious on talking this time. If we have so much capacity to think, if we have so much strength of mind, so much strength of experience in every field, in law, in judiciary, in legislation, in executive, in non-government, in institutions, where are they people? What they are doing? Is that not their duty to look after this? What recommendations have come? Only gossipism? Only laughism, stockism? Nothing else. अरे क्या फ़ायदा 130 करोड़ लोगों का, जिसमें अगर 5 करोड़ भी पढ़े लिखे होंगे, कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं तो सरकारी पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, सारे करीब करीब 3-4 करोड़ तो सरकारी हैं, और प्राइवेट में तो लिमिट ही नहीं है, लाखों इंजीनियर, लाखों डॉक्टर, लाखों वकील, लॉयर्स और लाखों बाकी सब। इंटेलेक्चुअल सोसाइटी कहते हैं हम अपने आप को, बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। शायद हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हो सकता है इंग्लैंड की पॉपुलेशन भी उससे कम पड़ जाए, यूरोप की पॉपुलेशन भी कम पड़ जाए, इतने से ज़्यादा हम स्ट्रेंथ रखते हैं। हमारे देश में कई करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं, कई करोड़, आप कह सकते हैं। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। 10 लाख तो यहाँ पे वकील हैं, और शायद 20-30-40 लाख इंजीनियर भी होंगे, और डॉक्टर भी कई लाख होंगे। आखिर क्या फ़ायदा ऐसी सोसाइटी का जो अपने प्रोफेशन में मस्त रहे, बस मन अपने प्रोफेशन में डूबी रहे और कोई लेना देना नहीं किसी से? अरे देश को देश समझ रहे हैं क्या हम? ये भी एक प्रश्न उठता है। वी हैव टू कंसिडर वेदर वी आर टेकिंग इनटू आवर अकाउंट दिस नेशन एज अ कंट्री फॉर एवरीबॉडी। डू वी बिलोंग टू दिस नेशन, और ओनली वी थिंक एवरीबॉडी हैज इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी? In a society where few percent people are educated, it's duty of those educated to look after. For those who are not educated, it happens in family also. If some people, only one person is educated, that person takes care of all other members. This is natural. एक घर में अगर एक आदमी पढ़ा लिखा होता है, बाकी पढ़े लिखे नहीं होते, सारे वो काम जो पढ़े लिखे के होते हैं वो आदमी को करना होता है। ये नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, but it is happening in this country. You cannot expect these workers, industrial workers who are physically oriented, who work very much by physical application, physical power, muscle power, and arts. You cannot expect these people to think for everything. They cannot. They have a capacity to understand physically. They can do work for us, and that work help us to learn more and more. But you cannot expect them to analyze. Analysis is a job of intellectualism. It's a job of intellectuals, engineers, lawyers, chartered accountants, professors, teachers, and those